Hello everyone and welcome back to my channel Lessons at Fingertips. Here we discuss on some important topics in real simple words so that it's easy for you all to understand and keep things in mind. Today our topic of discussion is going to be methods of measuring elasticity. Before we go on to the methods, let me first give you a brief introduction to what are the different kinds of elasticity that we actually experience in case of whatever demand function it is given. Now we can find the price elasticity, we can find the income elasticity, we can find any of the functions. That is, suppose demand function is given as dx equals to 450 plus 2px. Px is what? Price of x, plus 2py or maybe 2y, right? So that is what? Income of the consumer who is consuming x commodity, plus 2 of py, price of related good, that is why. इन सभी के ऊपर we can find out the elasticities. Okay, and how we are going to find out the elasticities? अगर function ऐसे दिया रहेगा तो find what? Del dx by del किसी के respect पे. If you are finding the price elasticity, then write px. Differentiate it, we get what? 2. उसके बाद px का value will be given, maybe suppose 5, and dx का सारी जगह पे value बिठा के you have got the quantity demanded is suppose 6. So what we are going to do 5 into 6. Got it? So this is ऐसे करके हम लोग निकालते हैं what is the elasticity. और elasticity निकालने के बाद what is the step? You need to find what? Mod of EPX. If you are finding the price elasticity, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए. Why? Because demand curve is negatively slope. तो आंसर will be coming in negative. अब उसको क्या करना है कि उसको हम लोग ऐसे we are going to find the mod value. Suppose the mod value is 1.63. 1.63 हो गया मतलब it is greater than 1. Greater than 1 मतलब highly elastic हो गया. ठीक है? Whenever the elasticity EPX is greater than 1 means what? Highly elastic. EPX less than 1 highly inelastic. ठीक है ना? Highly inelastic. EPX equals to 1, it is क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. ना इंक्रीज, ना इलास्टिक, ना इनइलास्टिक. ठीक है? And another thing we have got EPX equals to infinity, perfectly elastic. ठीक है? Perfectly elastic, and we have perfectly inelastic where EPX is equals to 0. अभी अगर EPX का mod value के पहले the value when you are finding the elasticity, if it is coming in positive, that means what? Law of demand को follow नहीं कर रहा है. It is not sloping downwards, so it is not following the law of demand. Got it? So अभी this was a brief introduction. Now let us move to the the process by which we can do this methods of elasticity, right? The first one is ratio or percentage method. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Point elasticity भी बोलते हैं. Now how do we do it? We will have the quantity demanded. We need to find the quantity demanded. What it is? See, proportionate change in the quantity demanded of x by proportionate change in the price of x. ठीक है? We are going to compare कि previously क्या quantity मतलब what was the previous quantity, what is the new quantity, what was the previous price with respect to that, what is the new price, है ना? And we are going to find out the percentage of that. तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? Ratio और percentage method. तो देखिए that is what? Q2 minus Q1 by Q1 if you are doing. So the difference you are finding out. We are finding out the difference by the original quantity. Similarly, difference by the original price, है ना? And we are getting the EP, right? So proportionate change हो गया in the quantity demanded by proportionate price in the change in the x. ठीक है? Price of x. अभी यहाँ पे also we will find out what EP का हम लोग mod value निकालेंगे. ठीक है? Why mod value? Because from there we are going to see it is going to be negative, है ना? If it is negative, it is following the law of demand. Not negative, not following the law of demand. Very simple thing. ठीक है? अब उसका mod value लेके we will find out if it is greater than, less than or equals to 1. Greater than 1 होगा highly elastic होगा, less than 1 होगा highly inelastic होगा, equals to 1 होगा rectangular hyperbola होगा, unit elastic होगी. ठीक है? Unit elastic होगी. That is what? Proportionate change in quantity demanded is equals to proportionate change in price. है ना? Got it? Understood? So इसको जब हम लोग करेंगे, now a very beautiful thing I am telling you. See, try and understand. When you are having a very elastic demand curve, what does that imply? Highly elastic. So ऐसे करके flat है. नहीं तो wait, let me draw it. So this is like this.
है ना, this is highly elastic. So here EP is greater than 1. Why I am saying this? You see, little bit change in price, थोड़ा सा प्राइस में चेंज करते हैं, ठीक है, इतना सारा क्वांटिटी में चेंज हो गया, है ना, इतना सारा क्वांटिटी में चेंज हो गया. So what happens when change in P is less than change in Q? When change in P is less than change in Q, तब हम लोग बोलते हैं क्या, EP is greater than 1. हाईली इलास्टिक होगा तो लिटिल बिट चेंज इन द प्राइस की वजह से देयर विल बी ह्यूज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. इसको और भी इलास्टिक कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके, लिटिल बिट चेंज इन प्राइस के लिए बहुत सारा चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, ऑपोजिट विल बी हैविंग, वी विल बी हैविंग फॉर EP लेस देन 1. अभी एक चीज ध्यान से देखते हैं, व्हाट इज इट. सपोज वी हैव गॉट dx का एज अ फंक्शन दिया हुआ है ना. So P is given, Y is given, P of Y is given. That is price of related good is given, है ना. यहाँ से what we can find out? We can find out the EP. Easily we can find out the EP because what we are going to do is dx by dp कर लेते हैं. तो कितना आता है? We have -3 आया ना नेगेटिव में. Now इसको हम लोग क्या करेंगे? EP निकालेंगे. What is EP? That is -3 into P कितना था? 4 by what is dx. वो पहले हम लोग dx निकाल लेते हैं. What is dx you see? ये आ गया क्या? 397 है ना. तो this 397 को अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, that is we got the dx है ना. So what we are going to do is find the elasticity. Elasticity कैसे करेंगे? The change we are writing the change. This is the change है ना. This is the proportionate change. Proportionate change we are writing into by into what करेंगे 4, that is price of x by quantity, that is 397 है ना. इसको ऐसे करके निकालेंगे. So whatever it coming, it will definitely come less than something less than 1. So it is inelastic है ना, highly inelastic है. तो mod value निकालने का है, यहाँ पे mod value निकालने का है, ठीक है. So this was the first process. This was the ratio or percentage method. फिर आते हैं हम लोग क्या, arc elasticity method में. What is arc elasticity method? जब where available values of price and quantity are discrete and it is possible to isolate and calculate the incremental changes, ठीक है ना. When this whenever the available value of price and quantity discrete है, ठीक है, अलग अलग है, discrete है, and it is possible कि हम उनको isolate करें and calculate the incremental changes, so then we call it was what arc elasticity. अभी एक चीज ध्यान में रखनी है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है ना, इफ यू आर चेंजिंग द ओरिजिनल प्राइस एंड द न्यू प्राइस को, देन आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी अलग आंसर आएगी. बट आर्क इलास्टिसिटी में ना, इफ यू आर सपोज टेकिंग P0 एज 2 एंड P1 एज इंक्रीज कर गया, ठीक है, प्राइस 4, तो प्राइस जब 2 था तब क्वांटिटी डिमांडेड वाज 10, ठीक है, Q0 था 10, अभी Q1 क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर गया तो 5 हो गया, राइट. सो इस सिचुएशन में वी विल हैव डिफरेंट, अगर रेशियो ये वाला हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी वाला, वी विल गेट अ इलास्टिसिटी, और व्हेन वी आर यूजिंग द आर्क इलास्टिसिटी वी विल गेट अनदर इलास्टिसिटी, है ना. बट इफ आई रिवर्स दिस थिंग, ठीक है, उसको फिर से हम लोग रिवर्स कर देंगे तो आर्क इलास्टिसिटी सेम रहेगी, बट रेशियो का पॉइंट इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट, है ना. So what it implies that whenever there is this change is occurring, ratio या तो point elasticity वाला method से if we are calculating, then what is happening? It is keeping on changing, है ना. It is different for different situation. Why? Because we are finding the elasticity at a particular point. But arc elasticity में what we are doing? We are not finding a elasticity for a particular point, but it is already a discrete variable, है ना. तो Q2 minus Q1 by फॉर्मूला क्या है देख लीजिए कि Q2 minus Q1 by दोनों को प्लस करना है, टोटल क्वांटिटी into 2, sorry by 2, total quantity by 2, है ना. And also the same thing goes for here, that is price P2 minus P1, the difference, the change by the total price by 2. Okay, now the third and very important thing is total outlay method. That is now we will be comparing कि total revenue में क्या effect हो रही है, ठीक है, price और quantity when it is changing, how total revenue is getting affected. Remember very important thing, when EP is greater than 1, little bit change in price का वजह से there will be huge change in the quantity demanded, है ना.
So when this is happening, मतलब कि if price is increasing, quantity will definitely decrease. But little bit change in price के वजह से quantity काफी सारा decrease कर जा रहा है. तो total revenue is what? P into Q. तो P into Q तो काफी कम हो गया ना. Got it? If price is 2, quantity demanded is 10. ठीक है. अभी price का वो थोड़ा सा fluctuate किया, little bit fluctuate. What is the total revenue? 20. ठीक है. P into Q कर दी. अब क्या हुआ? Price is changing little bit. Suppose 1. Quantity demanded काफी सारा change हो गया 5. What is the change? That is 5. Price थोड़ा सा change किया 3. है ना? Sorry, price decrease so quantity demanded will increase. Suppose 15 में चला गया. Sorry, 15 नहीं. Quantity काफी सारा change हो गया. 25 में चल गया. Price decrease so quantity increase. So यहाँ पे क्या हो गया? 25 हो गया. है ना? अभी प्राइस एक इंक्रीज कर गया एंड क्वांटिटी डिमांडेड फेल टू 5. तो यहाँ पे आ गया. सो व्हाट इज हैपनिंग? अगर प्राइस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थोड़ा सा भी फॉर इलास्टिक डिमांड का टोटल रेवेन्यू में काफी सारा इफेक्ट करेगा. सो व्हाट इज हैपनिंग? इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजिंग, सो टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज फॉर इलास्टिक डिमांड कर्व. If price is decreasing, quantity is increasing, total revenue will increase for elastic demand curve. जब यूनिट इलास्टिक रहेगा the change is equal, change in quantity demanded is equal to change in price. Total revenue में कोई इफेक्ट नहीं होगा. Next is EP is less than 1 means if price is increasing, quantity is decreasing, total revenue will increase. क्यों? Because lot of change inelastic है ना, तो it is like this steeper. बहुत सारा change कर दिया हम लोग प्राइस में, तो थोड़ा सा जाके क्वांटिटी में चेंज हुआ. Okay, lot of change in the price leads to little bit change in the quantity demanded. Okay, so for this kind of commodity, what are this kind of commodity? These are necessarily good. Okay, also EP is what? Increasing. So EP greater than less than 1 में क्या हो रहा है? If price is increasing, quantity demanded will definitely decrease. और उसका what will be the impact on the total revenue? Total revenue will increase because बहुत सारा price increase कर रहा है. ठीक है. And the opposite will happen for the decrease. और नंबर 4 में क्या लेते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लीनियर डिमांड कर्व में देख लेते हैं. लीनियर डिमांड कर्व का दिस दैट द मिडिल विल बी ईपी इक्वल्स टू 1. ऊपर जाएंगे तो ईपी ग्रेटर देन 1, जाते जाते ईपी बिकम्स इन्फिनिटिव. ओके, इक्वल्स टू इन्फिनिटिव. मतलब कोई भी चेंज कर लो प्राइस का, क्वांटिटी में कोई चेंज होने ही नहीं वाला, है ना. कोई भी चेंज कर लो प्राइस का, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला. मतलब दिस इज लाइक दिस, है ना. Also at the bottom, if you on the x-axis, right on the x-axis, you get what? EP equals to 0, where you can change at the same price. You can buy any of the quantity. Okay, और नीचे जाएंगे तो EP is less than 1. So this was all the methods of measuring the elasticity. Okay, and this was just the price elasticity. ऐसे करके we can measure the income elasticity, cross price elasticity. What is cross price elasticity? When you have two commodities, ठीक है, रिलेटेड गुड्स, तो उसमें हम लोग वी विल बी फाइंडिंग आउट इफ द रिलेटेड गुड इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इफ द रिलेटेड गुड इज अ सब्स्टिट्यूट गुड. तो वैसे करके वी गेट द क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है. और इनकम इलास्टिसिटी आल्सो वी फाइंड आउट टू गेट व्हाट काइंड ऑफ गुड इट इज. इंफीरियर है, नेसेसरी गुड है, नॉर्मल गुड है, गिवन गुड है, व्हाट गुड इट इज. ठीक है. टू फाइंड आउट दैट we use the income elasticity. So I hope you guys have liked this video. Please do hit a like and subscribe to my channel. Share with your friends for more such videos. Thank you. Bye bye.